जिस मोहब्बत में दर्द नहीं वो मोहब्बत कैसी है? ओए गेम ओवर बैकअप स्टार्ट कर रहे हो And welcome guys to the second podcast in the AMZ channel, and this podcast is called the Z Podcast. The Z Podcast. So, like I said last episode, that we have a new guest coming. So, our guest is the one and only my manager, Mr. Shani. Get in, tumke na maro. Alright. So this is Mr. Shani. He is one of my closest friend. And also he manages my YouTube channels. Everything. Yeah, he manages everything basically. फिर तो पैसे नहीं देता मुझे कोई बात नहीं. अंदर की बात है. Anyways, Okay. Well, today we're gonna be talking about deep questions. You know, those kind of questions which most of you want to know about our opinion, this and that. So अभी आज बहुत deep जाते हैं. Okay. बहुत ज़्यादा deep. Yes. Jump. Very deep into the sea. We gotta dig it. Yes. 1 Alright. or 2 1. So, let's see. The first question, which I will be asking you guys, is why do people stay in abusive or toxic relationships? Why do they stay? Like for example, मैं एक relationship में हूँ ना, and then मेरी जो लड़की है वो बहुत toxic है, बहुत abusive है, मगर मैं फिर भी उसके साथ हूँ. क्यों? प्यार अंधा होता है. Okay, I mean yeah, true. Cause I've been in one, so I know how that feels. Okay. But once, like you know, the limit होती है. Once you cross that limit, bye. What I feel like, why do people stay in abusive or toxic relationship is because they feel like वो लोग बदल जाएंगे. Like for example, I am with a girl and I'll be like, yeah, give her a bit more time, you know, and then give her a bit more time. She might change, वो बदल जाएगी. ऐसे करते साल भी हो जाए, 2 साल, and she just gets worse because she thinks कि it's fine being that way. And then maybe that's why I feel like it goes the same way for guys or girls. If you're in a abusive or toxic relationship, the other person thinks that he would change or she would change, but Nah, bro. they don't. Just Get out leave. of it. Red flag. ASAP. Yeah, just leave. So that's the first question, and you got the answer. Now, the second question is thoughts on arranged marriages. I want to hear from Hassan because Hassan is like always against it. Whatever I heard from him, whenever I talk about arranged marriage, he's like, nah bro, मैं कोई arranged marriage नहीं करना है, मैं अपनी मर्जी करूँगा. So why do you think that way? Can I swear? Yeah. तूने last में किया था गालियाँ, so you can. So for me, the whole thing is bullshit. Basically, because like look. Like when you're young, you call them like brothers, sisters, cousin, and all those words. And once you grow up, like you're literally gonna marry that person. Like your brother or sis. Like how cringe is that, bro? Too against it. You're against it. Yeah, Arranged marriage. What about you? Are you against arranged marriages? But मैं उनकी इज्जत करता हूँ जिनको करनी है. But you're against it now. You're against it. Okay. What about you? मुझे लगता है सही है, अरेंज और लव मैरिज दोनों ही होनी चाहिए. Okay. अच्छा 2 दफा शादी होनी चाहिए. नहीं मैं 2 दफा नहीं. इसके इरादे arranged marriage है कि love marriage? दोनों ही इरादे ठीक नहीं लग रहे इसके. 4 करनी है. एक ही करूँगा. क्या नहीं मतलब दोनों ही ठीक हैं. भैया बहुत आगे दोनों ही सही है, अरेंज और लव. हाँ, but what you prefer? इसकी अरेंज ही होनी है, वहीं जाएगा. डिपेंड है यार, अभी घर वालों के ऊपर. अगर घर वाले जैसे कि बहुत लोगों की बचपन पे ही अरेंज हो जाती कि तेरी बड़े होकर इसके साथ शादी होगी. बट कोई का यही होता है ना कि कभी कोई उनके अगेंस्ट जाते, नहीं यार मैं इनके साथ नहीं करूँगा, मैं इनको आप ही की नज़र से देखता आ रहा हूँ और आप मुझे इसके साथ ही. What I feel like is बस हो गया. What I feel वो इशारे दे रहा था. So back up. Okay, anyways, what I feel like for arranged marriages is मुझे लगता है कि it's fine, it's completely fine, because arranged marriage जो होता है ना, it's not specifically only for cousins or brothers or ये वो ना. It's not only for them. Like for example, if my parents ना, they would start finding a girl for me. They would go for their दोस्त के रिश्तेदार या फिर अपने रिश्तेदार के दोस्त, ये वो. Obviously you can be like, oh I don't want to marry her because
because she's my cousin and all, and they have to respect that because it's against Islam. First of all, you cannot force someone to marry. Secondly, it is not, if you don't want to marry someone in the family, you can always bahar se dhoond sakte ho na. So like for example, my dad can find his dost ke ladki, and then he'll be like, oh Osama, what do you think about it? You know, but har baap ki aise soch nahi hoti. Yeah, that's true. I have a very open-minded dad, so that's really nice. But I know there are brown people out there, brown dads out there, jo thode se strict hai because of their all izzat and all those, you know, rules and regulations. I get that. कि मैंने ज़ुबान दी है, मेरी ज़ुबान But you कट know, जाएगी, वही ना. इन सब को लेके ये जिसकी शादी करवाते हैं उसकी लाइफ का बुझ जाते हैं ना, लेकिन उनकी because खुद they की gotta शादी spend है, their life. exactly. वो उनको किसी और को शादी and then blunder हो जाता है पूरा relationship. But then I feel like अगर it's basically what I feel जब मैं arranged marriage सुनता हूँ ना, it's basically our parents helping us go into a relationship in a halal way. मोस्टली यही होता है कि कौन से माँ बाप अपने औलाद के लिए बुरा सोचेंगे. Yeah, exactly. वो हमेशा ये बोलते हैं मगर कभी-कभी बुरा सोचने लग जाते हैं. But कोई तो होते हैं. Yeah, obviously. But like I said, मुझे लगता है arranged marriage जब भी मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि माँ बाप जो है ना relationship ढूंढ रहे हैं अपने बच्चे के लिए, but in a halal way. For love marriage, obviously it's not halal, even though most of us have done it, but I would say it's not halal. It's better अगर तुम्हें पता लग जाए कि oh you're getting feelings for her and all, just and you know your age is already for like, you know, rishta nikah and all. Go and tell your dad, your mom, you know that person, be friends with them, but don't do anything physically, and you're good to go. Next question. We love the question. Next question is, why women are unsafe in any part of the world? What do you think about it? Why are women That's basically unsafe? what we talk about in our last podcast. Last podcast, Yeah, like Watch it out if you didn't. Go watch it. What do you think about it, Shani? Then I'll say कि मुझे क्या लगता है क्यों unsafe है इस दुनिया में. Most likely स्ट्रीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई ऐसे होते हैं, जैसे आप लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि लड़के बहुत डेस्परेट होते हैं. Yeah. और कोई कभी ऐसे भी हो जाता है कि मतलब लड़कियां जा रही हैं और मतलब चलो एक ही लड़की कर लो एग्जांपल, एक लड़की जा रही है, पीछे 5-6 लड़के खड़े हैं, पीछे से आवाज़ मार रहे हैं, ओए किधर इधर तो आओ, ये वो ये तो ऑब्वियसली एक लड़की वो घबराती तो है ना. इसलिए unsafe. For me, मुझे क्यों लगता है the main reason is social media. सबसे main reason जो है ना वो social media. Why? Because let's see Bollywood movies. Bollywood movies में ये कितना दिखाते हैं, बहुत दिखाते हैं, and then वही चीज़ audience करने लग जाती है. You know, they'll be like, oh Bollywood movies में तो दिखाया, इसका मतलब real life में भी होता होगा तो हम भी कर लेते हैं. You know, you get me. So इसलिए क्या नाम है, women are unsafe in this world is because of the mindset and the influence the social media has spread it towards the people for the women. कि basically woman एक object है, women are something to be sexualized and all, but they have never said कि woman एक चीज़, like woman is something, you know, like. और कभी ये लोग ये भी सोचते हैं कि हाँ एक ही लड़की ज़्यादा से ज़्यादा क्या कुछ कर लेगी. Exactly. And then obviously men are stronger than women. Yeah. So they're like एक ही तो लड़की है, and then हम like 5-6 तो हम उसको पकड़ लेंगे, ये वो कर लेंगे, क्या कर लेगी, घर जाएगी, बता हम भाग जाएंगे, like you know that one. That's why women are unsafe in this world. But काश ये like बात का सोच सकते ना अगर उनमें क्या बीतेगा. No, the thing is they're not educated ना. Again, they're not educated but you know, enough. इतना होना चाहिए. Yeah, like, उनके पास knowledge नहीं है, education नहीं है. They don't have any. दिमाग खराब है उनका basically. और मोस्टली वो लोग यही सोचते हैं कि हाँ हम लोग थोड़ा प्रेशर डाल देंगे, बोलेंगे यार खबरदार अगर तुम लोग ने किया तो हम भी घर में आ जाएंगे, this and that. तो इसकी वजह से चुप हो जाते लड़कियां हैं. डर And जाती that's हैं. why women are scared, you know. Like I said in the last podcast, टिड्डू सी तो होती हैं अभी, फिर डर जाती हैं, you know. It's not nice, obviously. What are your thoughts on people with anxiety? Very deep question. What are your thoughts with anxiety? Because ask for help. You know the best. Yeah. You know the best. Yeah. Just don't do anything fucked up. You know, even though you will have those thoughts, I'll say just don't go for it. Instead, ask for help. Like go to a friend, go to people that you trust, talk to them, spend some time with them, even your parents. My thoughts on anxiety is it is very dreadful. It is very
painful for the person who's going through anxiety, because मुझे तो personally कभी नहीं हुआ anxiety, मुझे भी कभी नहीं हुआ। कभी stress नहीं हुआ, सिर्फ मैं ही हूँ। मैं overthink करता हूँ, like you know I am very chill, I'm always chill for everything, even the problem हो रहा होता है I'm like देखा जाएगा क्या होता है, you know, इसलिए मुझे ना कभी anxiety overthinking कुछ भी नहीं हुआ, but I feel like जो लोग जाते हैं ना anxiety पे, I feel really bad for them because like you can see their legs start shaking, उनकी उंगलियां कांपने लग जाती हैं, the voice starts to tremble and all, and I feel really bad for them because I remember one time Hassan, we told him to dance with us, and then man had anxiety at that time, so he couldn't even talk properly, तेरे से बात भी नहीं हो रहा था ना, कोने में था मैं, yeah, and then like he was literally freezed, like he was gone, ऐसे देख रहा था बस नीचे, and then he couldn't do anything, he forgot everything, so I really feel bad for those who are going anxiety, but always remember that we are here for you, so if you have any anxiety problem, I will suggest always message. दूसरों के साथ share किया करो बातें अपनी। Yeah, the one sharing, that you yes. trust, and the person who gives you good advice, talk to them, because ये हमारे साथ ही बैठा है, ये बंदा okay, बंदे के पास हर एक चीज का हल है, हर एक चीज का, अपनी literally हर एक चीज अपनी का लैब है जहाँ सब कुछ मेडिसिन यहाँ मिलती पे है। therapist है यहाँ का therapist है। Anyways, you got the thoughts again, so let's go for the next question. हम बड़े मस्त answers दे रहे हैं अगर देखा जाए तो, man, हम तो Still got time. हम तो देख बस। Okay, next the सवाल is मोहब्बत दर्द क्यों देती है और दर्द के बगैर मोहब्बत क्यों नहीं होती? जहाँ मोहब्बत वहाँ दर्द, मोहब्बत के बिना दर्द के बिना मोहब्बत है ही नहीं कुछ। दर्द के बगैर मोहब्बत नहीं और मोहब्बत के बगैर दर्द you नहीं, तो know कैसी the मोहब्बत? शायरी। ओए होए ओए होए भाई शायर भी इधर है, हर चीज हमारे शायरी भी यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे हम बैठे हैं, so basically if there is love there is pain, Yeah. so if there is love and there is no pain, then what kind of love is this? done जिस मोहब्बत में दर्द नहीं, वो मोहब्बत कैसी? ओए गेम ओवर, Backup, cameraman. Anyways, the reason why I think कि मोहब्बत में दर्द होती है क्योंकि we expect too much from the person we love, okay? So for example, if I'm with my friends, I wouldn't expect too much from them. I'll be like, अच्छा हाँ ठीक है, वो गलती होगी bro, okay कोई बात नहीं. But then the person who I love and then they कोई गलती करे that I don't like it, वो दिल पे लगती है क्योंकि वो दिल में होते हैं. You know? man, Yeah, you see, हमारे जो प्यार करने वाले हैं ना, वो हमेशा हमारे दिल में होते हैं ना, and then they're literally next to our heart. So whatever they do stupid, that would literally hit our heart. That's why दर्द होती है. I mean, I'm going through that right now. So अच्छा, कोई बात नहीं, हम हैं ना. pass out. कोई भाई बात नहीं. प्लीज दुआएं करो यार, दुआएं करो है ना. But yeah, this is why I think the reason why मोहब्बत में दर्द होता है क्योंकि हम जो मोहब्बत करने वाले होते हैं और जिससे मोहब्बत होती है वो हमारे दिल के पास बहुत होते हैं, and अगर वो कुछ गलत करते हैं तो वो सीधी दिल पे लगती है, इसलिए दर्द होता है. What do you guys think? और कभी-कभी वही दर्द तुम्हें strong करता है ना? True, yeah. That वो pain दर्द- makes वो you दर्द stronger. actually makes you stronger. Yeah. But yeah, Respect. that's our Just answer for the question. respect. All right, next question is रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था शानी? रसोड़े में शानी था. मैं था Alright. अभी सारे गोपी पे ब्लेम लगा रहे हो, भाई मैं था. लैपटॉप यही धो रहा था। लैपटॉप मैं नहीं धो रहा था, लैपटॉप खराब, मैंने लैपटॉप की सजेशन उसको दी थी कि नहीं सॉरी, इसने टीवी धोई थी। Well, all right. Next one is, oh, this is for me. What made you want to start a YouTube channel? Ooh. All right, now we're gonna be talking about me. We're gonna be talking about myself. मुझे देख के किया था, Of course. So, हमेशा मुझे ही देख के कुछ ना कुछ करते हैं. मैं बहुत लोग क्यों पहले भी होता था यार यूट्यूब पर, मैंने बोला छोड़ो यार, जब शहजादा छा रहे तो खड्डे में बड़े यूट्यूब होना. but the reason why I started YouTube was because बचपन से I always wanted to be out there. हाँ, बचपन से I always wanted to be out there. I'm like, I like that attention when people give. You know, मैं जब शाहरुख खान को देखता था जब छोटा था, and then like people are like running after him, this and that. I wanted that. You know, मुझे वो चाहिए था, and then the fame and the money, everything about that I love about that. I loved everything about that. इसलिए I was like, okay, you know what? I will try. Before in Form 6, I had only like 40-50 followers. And then it slowly started spreading and spreading and spreading. I don't know. There was a reason. I appreciate your show. hard work, brother. But- माशाल्लाह. But then Yeah. I started to do TikTok first.
I did some TikTok, got thousands of views over there. Shani knows me from TikTok. Yeah, Shani knows me from TikTok, and I didn't know Shani at मैं that अपना time. बताता हूँ यार भाई मुझे कैसे मिला है. पहले टिकटॉक से स्टार्ट हुआ था, फिर इसने टिकटॉक में पोस्ट किया था कि मेरी यूट्यूब में एक पहली वीडियो आ रही. तो वो टिकटॉकर्स का क्या था तेरी पहली वीडियो? रिएक्शन था ना? Reaction to TikTok Reaction videos, था. yeah. तो भाई को उसी वक्त मैंने जब देखा, फिर मैंने उसी वक्त मैसेज किया, मैं बोला ब्रो आई लव योर वीडियो Yeah. एंड वेटिंग फॉर मोर. फिर उसके बाद जब मैंने बोला यार मतलब मैं तेरा फ़ैन हूँ बहुत बड़ा, और मैंने तुझे मैसेज भी किया था, तो इसलिए थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कि यार मेरे सामने एक से ज़्यादा जब गेम खेल रहा है. पर मैंने जवाब दिया मैसेज किया, मैं बोला वेट ये कौन सा उसामा है? उसामा मैं बोला ये यूट्यूब वाला नहीं है. बोलता हाँ ये यूट्यूब वाला. मैं बोला शिट जोल. फिर मैंने उसके बाद ऑटोग्राफ का भी पूछा था. हाँ, इसने पूछा था. मैं हंस रहा था. मैं कहा यार, एंड द थिंग इज मुझे नहीं पता था कि तू वो बंदा था जिसने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे. मैंने कहा अच्छा वो तू है? कहता हाँ. मैं कहा लो. टिकटॉक बैंड हुआ, सो आई ट्रांजिशन टू यूट्यूब में मैं गया. मैंने कहा शिट यार अब मैं पोस्ट करूँगा. तो वेird लग रहा था क्योंकि मैं नए प्लेटफॉर्म में था. मैं सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं ये वो क्या पता क्रिंज हो. आई वाज लाइक यू नो व्हाट, कर देते हैं, लेट्स गो फॉर इट, देखते क्या होता है. एंड देन बूम, आई गॉट लाइक 1.2k views until 2 weeks. मैंने 2 हफ्ते के लिए पोस्ट किया, and my first ever video hit like it माशाल्लाह. went up, and then Shani messaged, and that's how we started to know each other. Second, third, fourth, fifth, sixth, 6वें video के बाद I collabed with Shani with the horror game because he was forcing me, and then that's how I basically started YouTube. The reason why I started YouTube is, again, I want to be famous, I want to be rich, I want to help other people out who are also struggling. Because in my opinion, what I think is, I don't think there is any guy in Hong Kong who has received that much support as I have. मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है बहुत लोगों से. It's a blessing. अगर bro. दूसरे लड़कों को देखा जाए ना, उनको इतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मुझे मिला. So now I want क्योंकि to. तू एक ही चीज पे नहीं टिकाना, तो हाँ, अलग ही भी I am तू doing switch कर everything. रहा है. Yeah. तूने रिएक्शन वीडियो बनाई है, Yeah. ठीक है, तूने हॉरर गेम बनाई है, तूने स्किट्स बनाई हैं, Challenges किए. और अभी तो podcast में शुरू कर दिया लिया. Yeah, I'm slowly stepping everything up, and then obviously you guys are here to help. This is why YouTube inspired me, and this is why I started making YouTube. It's just to help other out as well. Okay, like for example, छोटे YouTubers नहीं, but YouTubers, new YouTubers, I'd say, they want some help. You know, you can just ask यार me. आप लोगों में से जितने भी अभी जिसने भी YouTube स्टार्ट किया ना, ये मत समझो कि यार हांगकांग में ऐसे व्यूज नहीं है, ये वो Yeah. ये वो. तुम जितनी वीडियो डालते रहोगे, एक ना एक दिन कोई ऐसा होगा जिसमें तुम्हारी लाइफ ट्विस्ट हो जाएगी. Yeah, at least one video, and then if I like the video and I see that you're actually struggling, I might even collab with you just so that my audience can come to your YouTube channel. You never know. So just if you want to be a YouTuber, just keep grinding. You know, just keep grinding. आपका And जो दिल करता है यार Yeah. डालो यार YouTube में. Literally. लोग कितना बोलेंगे, थोड़ा सी बोलेंगे. yeah, उनको इग्नोर मारो यार. आपका दिल Yeah. करता है जितना मर्जी डालो, पर एटलीस्ट एक ना एक कोई अगर आप में किस्मत में हुआ तो एक ना एक दिन ऐसा होगा. लाइफ यू टर्न. all right. यार हमारी पता नहीं कब होएगी यार. कोई मुझे कहता है ना, ओ यूट्यूबर कब वीडियो आ रहा है, आई डोंट टेक इट एज अ जोक. मैं एज ए इंसल्ट नहीं लेता हूँ. मैं कहता हूँ हाँ अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद. वो कहते हैं ये तो इसने तो लीव बंदा रेडी है. बंदा रेडी है. आई वाज लाइक हाँ ना, क्योंकि मैं करता हूँ यूट्यूब, सो ऑब्वियसली I am partially called a YouTuber, so you can call me that. I insult तो नहीं है मेरे लिए. So this is what I have learned के be a kind person, not a nice person. There's a difference now. What do you think about what's your biggest life lesson that you have learned? For me, I think is definitely don't expect much from anyone. You know, cause expectation kills. बहुत ज़्यादा. Don't expect. Yeah, and So much like from you everyone. know, if there's anything going on, life is too short, bro. Like you never know when that person is gonna go, like permanently. So just apologize, work things out, and move on from. And not even apology. Show your love every single day. Yeah. You know what? Life is Show short, man. literally show love every single day. Never go to bed sleeping angrily. That's With what the my mom has hate. told me all the time. कि मेरी माँ हमेशा कहती है कि कभी भी रात को गुस्से होकर ना सोया करो क्योंकि कल का नहीं पता. You know, so always cherish your day. If you wake up, always cherish about it. कि यार other people they sleep and they never wake up. You know, so you woke up, so there's a reason of you waking up, and the reason is you to make yourself a better person, and do that because it will be beneficial for yourself as well. So this is what I would say, ke
never हाँ गुस्सा हो जाता बंदा. And like you know, in the hero moment, you say a lot You of say stuff. a lot of things, yeah. But you know that you don't mean it. Yeah, but I would say okay, just at the end of the day, just say sorry or just Yeah, just apologize, move on with you life. know, It's and too or short. forgive, you know, because life is very short and you don't want ये ना हो कि मेरा कोई दोस्त मेरे से रूठ गया and then अगले दिन वो मर जाए, you know, and then I'm like exactly. shit man, God, and then I would regret it for my whole life कि काश यार मैं उससे बात कर लेता. सॉरी बोल देता. वही ना, इसलिए every single day you have to give your best, you have to love your best, you have to care your best because you never know उस बंदे के पास अगला दिन है, you never know you have another day, you know. I would say कि मैं बहुत ही bougie सा आदमी हूँ, bougie as in like नखरे वाला कि ओ नहीं यार मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, ये नहीं लाइक शानी से पूछ, शानी जब भी रिकॉर्ड करता है ना मेरे लिए वीडियो ना, लाइक मैं शानी को कहता हूँ नहीं रीटेक कर, नहीं रीटेक कर, नहीं रीटेक कर, ये अच्छा नहीं है, इसका मुंह देख के हंस रहा है, इसका नहीं. लिटरली हमने कितने घंटे, हम एक दफ़ा उधर गए थे ना मिराडोर मेंशन वो देसी हाउस होल्ड के लिए, हमें कितने 4-5 घंटे लगे थे उसके लिए, इवन दो लाइक स्क्रिप्ट 1-2 घंटे की थी, हमने 4-5 घंटे लगाए थे क्योंकि मैं बार गया नहीं फिर लगाओ, फिर करो, फिर मेरे तुम लोगों ने आउटरो देखे कितने गलतियाँ, फिर मैंने कहा ना चेंज. मैं बहुत ही नखरे वाला आदमी हूँ एंड देन या इसलिए you guys, मुझे लगता है इनको ज़्यादा पता लग गया हमारे बारे में. Yeah, पहले पॉडकास्ट में भी बहुत बोला है. It's a good thing, bro. अभी next episode 3 podcast, we will have a new topic again. I want to go to those type of topic कि कोई बोलता नहीं उसके बारे में, and मैं बोल सकता हूँ क्योंकि I really don't care. मैं care नहीं करता हूँ. If you wanna tell me the topics, I'll say it out. I'll literally talk about it and I will let the people know okay, whatever you guys are doing is wrong or whatever you guys are doing is right. I will support those who are good and I will not support those who are bad. So just come at me. मेरा कौन सा channel इतना boom हुआ हुआ है कि मेरा channel demonetized हो जाएगा. Just come at me. I'll just make a video, post it out, easy as hell, because I really don't care. मैं care नहीं करता हूँ कि लोग क्या सोचेंगे. So we don't have plus 18 content in this YouTube channel. No, family is. You can literally watch it with family and all. So Yes. this is what I always wanted. So yeah, and I think we have covered up everything for our podcast for the episode 2. This is the Zcast, and we will see you in a bit again. So it has been your boy AMZ. This is my manager Shani, and this is my good friend Hassan. Oh, We'll see you man. guys in a bit. Take care and Take peace. care. Allah Hafiz. I hit recorded drop, you can't ignore it.